और यहाँ पर श्रीलंका ने टॉस जीता है, पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑड्स की। तो जो यहाँ आपको देखने को मिल सकता है वो ये है कि इंडिया पे आपको मात्र 100 पे 20 रुपये ही मिलेंगे, और श्रीलंका पे आपको मिल सकते हैं 100 पे 350 रुपये। बहुत सारे रुपए हैं वो। और आपको कितना लगता है कितना स्कोर कर पाएगी इंडिया अपने फर्स्ट 6 ओवर्स में? फर्स्ट 6 ओवर्स में आपको मिल रहे हैं 100 पे 44 रुपीज़, और फर्स्ट 20 ओवर्स में आपको मिल रहे हैं 168.5। सो आपको लगभग 50 रुपये मिल रहे हैं। तो नेशनल एंथम फिनिश हो चुका है। अब प्लेयर्स एंटर करेंगे बैटिंग करने के लिए। रोहित शर्मा और ईशान किशन इस मैच में ओपन करते हुए आपको दिखाई देंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। जिसने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, बेल आइकन प्रेस कर सकता है। तो कुछ ही देर में मैच स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा मैच होने वाला है, बट इसमें आपको स्काई खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। स्काई नहीं खेल रहे हैं आज के मैच में। ऋतुराज गायकवाड़ भी आपको खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। रोहित शर्मा और ईशान किशन आपको ओपन करते हुए दिखाई देंगे आज के मैच में। वन डाउन आपको संजू सैमसन खेलते हुए दिखाई देंगे। सो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। अगर आप ऑड्स लेना चाहते हैं पहले 6 ओवर में 44.5 यस कर सकते हैं आप। रोहित शर्मा और ईशान किशन आते हुए मैदान पे। 6 ओवर 69 नॉट इंडिया। There will be a contest between Rohit Sharma and Chamira. He is one of the best bowler. सो केएल राहुल भी आपको खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। केएल राहुल को भी इंजरी हुई है। रोहित शर्मा और ईशान किशन आपको ओपन करते हुए दिखाई देंगे, और चमीरा आपको ओपनिंग बॉलर के रूप में दिखाई देंगे। आपको लगता है श्रीलंका का जीतने के कोई चांसेस भी हैं इस मैच में? लेकिन मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा है। श्रीलंका भी कुछ ही दिन पहले हार के आई है ऑस्ट्रेलिया से। और मैच स्टार्ट होता हुआ। और मैच स्टार्ट हो चुका है। वन ऑफ द गुड फास्ट बॉलर दुष्मंता चमीरा। He is very good at what he does.
Dushmanta Chamera has bowled Rohit Sharma out 4 times in a row. First ball, Rohit Sharma on strike, hit straight down the ground. It will be a dot ball. That's a very good ball by Dushmanta Chamera. And it's 2 dot balls in a row for India. Straight down the ground, it will be a single. Oh, it was a very risky single. Both the batsmen were at the same end, and it was a misfielding, which was. It would have been trouble for India if the fielder would have gathered that ball cleanly. By the matter of the fact that they were not able to grab that ball clean, that's the reason it was a easy single in the end. And here comes Ishan Kishan on the strike for the first time in this match. Oh, it was a very good ball and it was a quick single. And Ishan Kishan is off the strike. So 4 balls, 2 runs only in this over so far. Rohit Sharma will be on strike for the last 2 balls. Let's see how it goes. Oh, that's a top edge over the fielders. It's a long boundary here. Oh, it's a dot ball again. Very good ball. So 5 runs from the first over, and Rohit Sharma is playing at 4 runs in 4 balls, and ईशान किशन at 1 and 2 balls. और बैटिंग odds की बात कर लेते हैं तो इंडिया पे आपको कुछ खास मिलेगा नहीं। 100 में आपको सिर्फ 16 रुपये ही मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं। फर्स्ट 6 ओवर 42.5. It's a long boundary, may not be possible. Look at these long boundaries.
Cracks is visible clearly from my side. Pacers are key. Dew will not play role as per creators. ब्लैक सॉइल बाउंड्रीज की बात कर लेते हैं तो पैस 62 मीटर्स की थर्ड मैन के डी रीजन पे है 62 and 81 down the ground 69 in the leg side and for 76 on the off side. That's a very good shot. It's 4 runs for Rohit Sharma. It's a very good boundary by Rohit Sharma. शर्मा जी का लड़का मार रहा है. That's a very good shot by Rohit. Oh, that was pulled away, but straight to the field. So just a single. So 1.2 overs, 10 runs for India so far. Rohit Sharma 9 runs of 6 balls and Ishan Kishan 1 of 2 balls. Will be on the strike for the first time in this over. It's a huge boundary. It's a very huge boundaries here. Oh, swing and a miss. Shankar, Sri Lanka players have pace. They have a very good pace attack. So after boundary and a single, there is 2 dot balls in a row. Tried to pull that away and it was not able to get onto that ball, and it will be a dot ball again. This wicket does not have a great pace, so you can expect not high scoring runs in this ground. There will not be there will not be too many runs in this wicket, so you can actually. Oh, that was pulled away in the long side and it was straight to be a field and miss single. तो 6 रन आ चुके हैं इस ओवर से, मात्र 6 रन. And of course, talking about an experienced Sri Lankan lineup, they have been missing their main bowler, which is Hasharanga. So 11 runs from 2 overs and winning odds are not that great so far. तो यहाँ पर अभी तक जो रन्स की बात कर ले तो कुछ खास रन्स बने नहीं हैं, और जहाँ तक कि बाउंड्रीज की बात कर लें तो बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं ज़्यादा रन्स नहीं बनेंगे इस ग्राउंड में. और यहाँ पर वाइट बॉल के साथ शुरुआत की है चमीरा ने, सॉरी
इट्स नॉट शमीरा, इट्स समीका करुरत्ने। ज़्यादा रन्स की उम्मीद मत करना इस वेन्यू में, क्योंकि वेन्यू बहुत ही ज़्यादा। अगेन इट्स अ डॉट बॉल। Oh, that is a full toss and it's a four. You just need to find the gaps. Maybe boundary may be big, but good shot will fetch you runs, that's for sure. That was a nice gift by Chamika Koratne. पिच की बात कर लेते हैं तो पिच में बहुत ज़्यादा क्रैक्स हैं और पेसर्स इस वेन्यू में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और यहाँ पर एक और बाउंड्री के साथ शाखा मारा है किशन ने। Oh, that was a very good shot by Ishan Kishan. Looks in an ominous touch so far. You can expect Ishan Kishan to be a bit of aggressive batter. India have put faith in that young lad. They are expecting him to fire today. And here you go, another boundary. Three boundaries in a row for Ishan Kishan. If he keeps going, there is no way anybody is stopping that guy. Oh, that's a fine shot. So 14 runs off 9 balls for Ishan Kishan. So far, four, three fours in this over so far. Oh, that's a very good shot. 25 for none, 2.5 overs done and dusted. The ball could not find the gap, but just a single. Ishan Kishan is the type of player which loves width. Well, every batter loves the width. It's not that just one. And Ishan Kishan did not have a quick start against West Indies. He was not looking in great touch. But as this game, he is looking quite good so far. Touchwood, he can continue with his form so far. Last ball of this over coming soon, and it's a single. Inside edge onto the pads of Rohit Sharma, so it will just be a single. So looking at the over, total of 15 runs in this over, and 3 overs done and dusted. India 26 for none. So let's see who is going to be the next bowler. I think Jamira will be back. He is the one of the
Great bowlers. Laru Kumara is back with his second over. That was a quick and fast and straight to the fielder. But they will little bit of misfielding by the here comes second ball, swing and a miss. There is no movement in this pitch. Another good ball, and it is a quick single by Ishan Kishan. And of course, Ishan Kishan has got the start. Should capitalize on that, cannot go to waste. Yes, and it's a white ball again by Nehru Kumara. You can't bowl white balls. He is a type of a bowler which ideally balls, uh, what can you say? Mm, fast balls with pace, but he has to learn to actually bowl slower ones too if he wants to be an very good international bowler and actually have more than one weapon in his arsenal. He is a very quick bowler. Sri Lanka has very good bowlers in their lineup which have pace. They have actually very good pace. Oh, it's pulled away. Very good shot, and it's a six. This is a big boundary, but that's a very good shot by Ishan Kishan. Looking in a great touch so far. 22 of 13 balls only. Can you expect something big is loading for Ishan Kishan in this match? I hope so. He is a very, very good batter. Another ball and it's a boundary. Very good shot by Ishan Kishan. Laru Kumara being expensive so far, as expected of him. So 4 overs done and dusted. इंडिया और 40 फॉर नन. जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले. 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से इंडिया जा रही है. बहुत ही धुलाई हो रही है ईशान किशन के बल्ले से. 26 मार चुके हैं 14 बॉल पे. और यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं
ऑड्स की तो ऑड्स लगभग ख़त्म ही हो चुके हैं इंडिया पे। श्रीलंका पे बढ़ के बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुके हैं। 40 रन बना दिए इंडिया ने अभी तक। ईशान किशन 26 of 14 balls. Here comes Praveen Jayavikrama, starts with a single. That's a fabulous start by Ishan Kishan, 27 of just 15 balls. 4.2 overs done and dusted. India 42 for none. Pulled away just to have a single. Rohit Sharma will be on strike now. Rohit Sharma has not been able to hit boundary so far. Rohit Sharma prefers playing slog sweeps. He is doing the right thing, taking the single and bringing Ishan Kishan on strike. Oh, that was a very good ball. That's a very good ball. Oh, down the ground. And it's a 4. He was diving over the ball. You don't have to dive to stop the ball, not over the ball. Poor fielding by Sri Lankan fielders. It was hit very, very hard. Oh, that should have been stopped. That's not a good sign for Sri Lanka. Giving himself room and straight to the bowler. 47 without loss. Sri Lanka. Sorry, India, not Sri Lanka. आज जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। लाइक नहीं कर रहा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और इसमें बैटिंग टिप्स की तो बात ही नहीं करनी। इंडिया आसानी से मैच जीतना चाहिए, कुछ ज़्यादा इंडिया को आफत नहीं आनी चाहिए श्रीलंका को हराने में। तो 5 ओवर खेल हो चुका है। इंडिया ने बना दिए हैं लगभग 47। Oh, it's up in the air, and who is going to? And it was in the. It was a slower one. Rohit Sharma hitting the ball in the air, and he's safe. He was not able to get the distance which he was looking for. "81-meter long boundary. Should get 2 runs in this ball, but a very good fielding by the fielder. So just 1 run.
So 50 up for India in 5.2 overs. Current 100 is 9.38. Samira is the one of the bowler who is going to be the key here. How he bowls, he will be the one to decide the fate of this match for Sri Lanka. Oh, that's a very good ball. Six boundaries so far in this innings for India. Rohit Sharma will be the man now. He will he will try to look for big sixes now. Once he keeps going, then there is no one who can stop this Rohit Sharma. Pulled away, very good shot, and it's a six. That's a very good batting by Ishan Kishan. 37 of 20 balls. That was a monster, but could not get close to the helmet. And it's Ishan Kishan gets a very good start. 37 of 20 balls so far. We are impressed by the way he started this innings. Can this be a big game for Ishan Kishan? Can he get the big runs in the looking fluent in this match? And Sri Lanka has been thrashed by Australia in home series. Sri Lankan bowlers haven't bowled that really well, you know. Oh, full toss hit straight down the ground. Oh, it's above the fielder. So, couple of runs in the last ball. 58 without loss. India 6 over done and dusted. That's a very good power play for India. 36 बॉल बना दिए हैं 58 रन बहुत ज़्यादा रन है और करंट रन रेट इज़ 9.67. दैट्स अ वेरी गुड रन रेट. रोहित शर्मा खेल रहे हैं 17 रन पे 14 बॉल पे. और अगर उस पर बात कर लें ऑड्स की तो आपको 100 पे 6 रुपये मिलेंगे इंडिया पे. श्रीलंका पे आपको 100 पे लगभग कितने मिल रहे हैं ये 930 रुपये. बहुत ही ज़्यादा. पर श्रीलंका पे कौन लगा रहा है. श्रीलंका की हालत देख के लग नहीं रहा है कि अभी तक तो लगा नहीं. Jai Vikrama will be the new bowler. Starts with a dot ball. Rohit Sharma will be on strike now. You don't expect big runs in this match, if you ask me, because of one of the fact that ground is very big, and second thing is the pitch has lots of cracks, which is good for fast bowlers.
If Sri Lanka bowls poorly, then anything can happen in this match. Oh, that's a very good shot by Ishan Kishan. 43 of 23 balls. Looks like in a very different level, Ishan Kishan. Oh, it's up in the air and dropped. And catch has been dropped. Ishan Kishan has been given the lifeline. That's a very poor fielding by Sri Lankan team. Top page, come on man, you have to take these catches. Sri Lankan poorly. It was a very difficult catch, but nonetheless you are expected to actually straight down the ground for a single. 67 for no loss India after 7 overs. जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर सकते हैं आप. But let me tell you, Ramayana has just begun. Da, dun dun da, dun dun da. चमिया करोड़त ने डालेंगे नहीं 8वां ओवर इस मैच का. Ishan Kishan 46 of 25 balls so far, played a very good innings so far, but he has been given a lifelines in the last over. He has to make best use of that lifeline. Van der Sar should have gotten the wicket. Oh. सो अभी तक इस ओवर से आए हैं मात्र 4 रन. बहुत ही अच्छा ओवर डाला है शमिका करुरत्ने ने. Pulled away nicely by Ishan Kishan, but just a single.
There is plenty of room. And here you go. Rohit Sharma. Oh, that's a very good shot by Rohit Sharma. Swapped by Rohit Sharma. There was a drive from the Sri Lankan fielder, but could not. Chamika Karuratne back of the hand, but that was swapped very good by. कट 8 ओवर हो चुके हैं 76 फॉर नन हो रहा है इंडिया का टोटल और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक नहीं करा लाइक कर सकते हैं वीडियो को यू कैन और यहाँ पर ये बिग बाउंड्रीज हैं बट इंडिया बहुत ही ज़्यादा अच्छे रन रेट के साथ आगे बढ़ रही है इस मैदान में रोहित शर्मा विल बी ऑन स्ट्राइक Jeffrey Van der See will be the next bowler. That was a catch over a third man for 3 runs. Ishan Kishan will be on strike, pulled away, but dot ball. So 4 runs from this over so far. 80 for non-India. 8.3 overs का खेल हो चुका है. Down the ground, and it will just be a single. Oh, that's a very lovely shot by Rohit Sharma. That's a 6. Very less efforts by Rohit Sharma to get into that shot. Square luck side, and it's a 6 for Rohit Sharma. Moves his respective total to 36 or 23 balls. Very good shot. When Rohit Sharma hits, it stays hit. 86 meters, 6 by Rohit Sharma. That's a very good shot. Oh, that's a dot ball. Rohit Sharma thought it was a white ball. Of course, Sri Lanka is missing Hasranga in this match.
Saving bowling option in Islamabad United. Even Will Jacks is good off spin, so can say 8 bowling option. इंडिया 87 फॉर 9 ओवर का खेल हो चुका है। श्रीलंका ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। अभी तक बॉलिंग का फैसला कुछ खास साबित नहीं हुआ। इंडिया ने बहुत धुलाई की अभी तक। जेफरी वेंडरसे ने 2 ओवर पड़वा दिए हैं 20 रन। थोड़ी अच्छी बॉलिंग कराई थी, ड्रॉप कैच हुआ था ईशान किशन का अभी तक, वरना बढ़िया खेल रहा है लड़का ईशान किशन। 46 और 29 बॉल्स, बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहा है अभी तक। लेट्स सी हाउ मच टोटल कैन इंडिया पुट ऑन द बोर्ड। 88 ऑफ नन, 9.1 ओवर का खेल हो चुका है। And little clumsy by Sri Lankan fielder so far. Oh, that was a so Ishan Kishan. Let's see how he goes about his business. That's a shot. $50 for Ishan Kishan. It means a lot. 50 of 30 balls. That's a very good innings by Ishan Kishan. लड़के ने बहुत ही अच्छी शॉट्स मारी हैं। He should be very happy with this performance. Ishan Kishan is one of those batters which can actually score 100 in T20. He has the capability to score quick runs. He is one of those players who can actually score runs in his own merit. Darshan Chanaka has bring himself on. Let's see what he can do in this situation. ईशान किशन स्ट्राइकर 164। और अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक नहीं करा, लाइक करके देखिए, अच्छा लगता है। लाइक करके देखिए वीडियो को, अच्छा लगता है। और स्टेशन चना का अपने आप को लाए हैं, अभी तक 6 रन दे चुके हैं 4 बॉल पे। ये बहुत ही बड़ी बाउंड्रीज हैं, बट अभी तक इंडिया जैसे रन मार रही है उसे देख के लग रहा है कि बाउंड्री कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है। Oh, that's and here you go, another boundary for Ishan Kishan. Finishes 10 over for with a boundary. 98. That's a very good shot. $98 for no loss. India 10 after 10 overs, and it's a drinks.
ड्रिंक भी हो चुका है। ईशान किशन की बात कर ले, 55 रन पे खेल रहे हैं 32 बॉल पे। रोहित शर्मा 41 पे खेल रहे हैं 28 बॉल पे। इंडिया कमांडिंग पोजीशन पे है, और जिसने लाइक नहीं किया लाइक करके देखो, अच्छा लगता है। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके देखो, और भी अच्छा लगता है। और ड्रिंक्स ब्रेक चल रहा है अभी थोड़ी देर के लिए। पेशावर जालमी ऑप्टेड टू बैट फर्स्ट। अच्छा, तो पेशावर जालमी बैटिंग कर रही है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं इस मैच में। एलेक्स हेल्स वापस आ चुके हैं मैदान पे, और लगता है यहाँ पर पेशावर जालमी अच्छी टीम है यार, है ना? हाँ, बहुत ही अच्छी टीम है। अभी तक कोई भी बॉलर नहीं दिखाई दिया है श्रीलंका की तरफ से जो कि इंडिया की धुलाई से बच पाए। अभी तक सबकी धुलाई हुई है। अभी रिव्यू की बात कर लेते हैं अभी तक जो भी हुआ है। तो यहाँ पर ईशान किशन आपको केला खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अपने हाथ में क्रीम, और रवि बिश्नोई आज का मैच नहीं खेल रहे। स्पिन बॉलर आए हैं मैदान पे। रोहित शर्मा 41 पे खेल रहे हैं 28 बॉल पे। ईशान किशन की बात कर लेते हैं तो 55 रन पे खेल रहे हैं 32 बॉल पे। दशु सनाका ने अपने पहले ओवर में पढ़ाए 11 रन। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करो, लाइक नहीं करा तो लाइक कर सकते हो। इंडिया ने अभी तक सिर्फ 16 डॉट बॉल खेली है इसमें। दैट्स अ वेरी गुड फील्डिंग। Ishan Kishan looks in an ominous touch. Wow. If Sri Lanka wants to get back into this match, they need the wicket of Ishan Kishan. Who is going to break the partnership? Oh, that's a very good shot inside out by Ishan Kishan. Very good fielding. Ishan Kishan is actually playing with the field. He's making room for himself and actually is hitting that ball in gaps. Not the Ishan Kishan we have seen in the West Indies series. It's a new Ishan Kishan we are seeing. They are checking the boundary, and it's look like it's not a boundary. That's a very good fielding. Ishan Kishan looks like he wants the strike all the time. He's in that touch. Look at the strike rate so far. Ishan Kishan 171, Rohit Sharma 144. धुलाइयाँ चल रही हैं।
And here comes the next ball. And looks like Ishan Kishan has been having a little bit of discomfort. Oh, he's not looking good. ईशान किशन की बात कर ले 60 रन पे खेल रहे हैं 35 बॉल पे अभी तक बिल्कुल भी looks like Ishan Kishan is having some treatment, something in his back of the leg, maybe an some muscle injuries look like Ishan Kishan. Actually having some treatment. That's a very good inning. If we talk about his batting, he is looking in absolutely great touch. He hasn't been overhit a ball so far. Just one drop catch for Ishan Kishan's batting so far. जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर सकते हो लाइक नहीं किया लाइक कर सकते हो looks like Ishan Kishan is ready now. It was just a cramp and now looks like he is going to and Rituraj Gaikwad is not playing this match because he is injured. India is actually dealing with injury now. Man, this is a very 7 runs from this over so far. 7 runs from this over. 106 for North India. 11 overs done and dusted. इतने ज़्यादा रन्स बना दिए इंडिया ने लगभग 200 पार तो होने ही चाहिए अभी भी कितनी बॉल्स बची है इंडिया के पास 54 बॉल्स बची हुई 9 6 54 9 ओवर बचे हैं 46 बॉल 56 बॉल में तो बहुत ज़्यादा रन्स आ सकते हैं इंडिया ने 60 बॉल में लगभग बनाए थे 98 200 का लक्ष्य पार होना ही चाहिए इस मैच में तो लहरू कुमार आए हैं वापस third over for Lehru Kumara. That's a very good timing. So 3 runs from this over so far. And it's a single for Ishan Kishan. 64 of 38 balls. And Rohit Sharma 43 of 30 balls. Partnership of 109 in just 68 balls. Rudraj Gaikwad was injured in the morning only. He was fit so far, but
In the last couple of hours, he was having some discomfort. So 4 runs so far in this over. And Ishan Kishan has been given a window, and as a selector you can't give too much window to just one player. There are so many players who are waiting in the dugout for their chances, so it will be not a good thing. Last couple of overs has dried up boundaries, but India has run quick singles so far. Oh my god, here you go. Oh, that's a very good bowling. Sri Lanka gets their first wicket. Oh my god, Rohit Sharma is gone. Rohit Sharma gone for 44 of 32. That was a slower ball. My goodness, that's a very good ball, Bal Rahit Leharu Kumara. It was a ball worth a wicket. Rohit Sharma gone for 44 of 32 balls, and now comes Shreyas Iyer, one down. He can be also a handy batter when he comes to hitting. श्रीलंका को अपना फर्स्ट विकेट मिल चुका है 111 पे एक हो चुका है श्रीलंका का सॉरी इंडिया का स्कोर 11.5 ओवर्स का खेल हो चुका है। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, जिसने लाइक नहीं करा लाइक कर सकते हो। अच्छा लगता है वाह बेटा, अच्छा लगता है। You can be a part of it. Oh, that's a very good fielding. 6 runs in this over and a wicket, and India won 1-2 for 1. 12 over done and dusted. तो कितने रन्स पे रोक सकती है श्रीलंका इंडिया को, अब देखना होगा, क्योंकि 12 ओवर खेल हो चुका है। 112 का स्कोर हो चुका है एक विकेट के नुकसान पे। एंड स्लोअर वन इज डूइंग द ट्रिक फॉर फास्ट बॉलर्स। If you want to ball in this wicket, it looks like you have to ball it slower. You can't give pace to the batters in this wicket. Here comes the Van der Sar Jeffrey. Let's see how they go about it now. In 10 overs, they were 98. And a fantastic 50 by Ishan Kishan. लखनऊ में मैच खेला जा रहा है इंडिया वर्सेस श्रीलंका का।
पेशावर ज़ालमी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच चल रहा है। That's couple of runs for Ishan Kishan. Oh, it's an age and that's lucky. Lucky Ishan Kishan is lucky today. That's a dropped catch by the keeper now. Vandese is unlucky. Ishan Kishan in both occasions. It's an edge and it's through the keeper. Oh, that's a reverse sweep. That's a dot ball. 121 for 113 over done and dusted. And 9 runs from this over. And it was an unlucky four for Van der Sar. He actually has deceived Ishan Kishan 2 times so far. But when things don't go your way, they never go your way. That's how it is. And Chamika Karuratne, expensive in his first 2 overs, conceded 24 runs. Not the kind of start he wanted for himself and his for team. Can he come back in this over? Can he take a couple of wickets in 1 or 2 wickets in this over? Here comes Chamika Karuratne. Oh my god, couple of runs in the first ball. पहले ओवर पे आए 15 रन, भाई 15 रन पड़ा दिए डॉसन ने, क्या बात है। So 3 runs from this over so far. Ishan Kishan 71 of 43 balls. Oh, Ishan Kishan is going. That was a very good shot, but straight to the field. He is looking for. Try to go hit. Taking the pace off. That's the key here in this. If Indian bowlers are seeing this, Harshal Patel will be the key in this match also. Fast bowler is going to use their black slower one. Indian captain Rohit Sharma has now become the highest run getter in the T20s, and the right-hand batsman achieved the feat during the first match of the series against Sri Lanka in Lucknow. Width and straight to the field. Sharma has now crossed 3,300 mark
and is followed by Martin Guptill and Virat Kohli in second and third position. तो यहाँ पर रोहित शर्मा के लिए एक और माइलस्टोन जुड़ गया इस मैच में। वो सबसे हाईएस्ट रन गेटर हो गए T20 इंटरनेशनल में। उसके बाद मार्टिन गप्टिल हैं, उसके बाद विराट कोहली भाई जी हैं। तो 14 ओवर खेल हो चुका है, 125 पे 1 हो चुका है इंडिया का स्कोर। 4 रन ही आए इस ओवर से। बहुत ही अच्छा ओवर डाला गया चमिका करवतने के ने। लगता है समझ आ चुका है श्रीलंकन बॉलर्स को। स्लोअर वन इज द की हियर। द मोर you bowl slower in this venue, you are going to trouble the batsman. And Chamika Karwatne did the same thing in the previous this over, taking the pace of the ball. जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। जिसने चैनल को लाइक नहीं करा, लाइक कर सकता है। करके देखो, अच्छा लगता है। और यहाँ पर जेफरी वेंडर से आए हैं नए बॉलर, अपना लास्ट ओवर डालते हुए कोटे का। Oh, swing and a miss. That is a very good ball. Try to go hard but not able to connect the ball properly. 72 of 47 balls. Looks like bowler have understood now. You don't give pace to the bowler. And Indian bowlers will be looking at this and will be thinking, if we bowl slower one, we can actually deceive the batters in this venue. Remember, this is a long ground. It's not a shorter ground where you can hit sixes and fours like a piece of cake. And India has slowed down so far. Let's see. Oh, looks like stumping check, but I think Ishan Kishan is so last 20 balls 5.7 का रन रेट चल रहा है इंडिया का। करंट रन रेट की बात कर लेते हैं, 8.76 का है। तो थोड़ा सा स्लो है इंडिया अभी बीच के ओवर्स में। बहुत ही अच्छी बॉलिंग कराई है श्रीलंकन बॉलर्स ने। और यहाँ पर स्लोअर वन डाली, बहुत ज़्यादा स्लो थी। मुझे लग रहा पहुँच गए। जब तक उन्होंने बेल्स हटाई तब तक ईशान किशन अपनी क्रीज में वापस पहुँच गए थे। दिनेश चंदीमाल इज द वन हु इज Ishan Kishan was way out of his crease. Let's see, did he get back? There is no ultra age, so it's a not out. The Chamika took way longer than it was required. That's not the way you do stumping. Wide ball, and it will be a single two. Ishan Kishan has slowed down. Just 16 runs in 18 balls in the last 18 balls so far. Try to go big inside out and one tip to the fielder, just a single.
I believe this is a very good over by Vander Se. Just conceded 5 runs from this over. Oh, swing and a miss. Ishan Kishan struggling with his to get the ball away. Look at his strike rate, is dropped 146 now. जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लो, जिसने चैनल लाइक वीडियो को लाइक नहीं कर लाइक कर सकता है। आपको बैटिंग टिप्स मिलती रहेगी इस मैच में। तो क्या बैटिंग टिप्स देनी, इसमें तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि इंडिया जीत रही की इसमें कोई शक नहीं। बट प्रॉब्लम वहीं आ जाती है कि दो टक्कर वाली टीमें मुकाबला करें तो पता मज़ा भी आता है। लहरू कुमार अपना चौथा ओवर डालने आए हैं अभी। लुक्स लाइक विकेट गिरने के चांसेस बहुत बढ़ चुके हैं। मेकिंग रूम फॉर हिमसेल्फ। पेशावर ज़ालमी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में मैच चल रहा है, तो आप इस्लामाबाद यूनाइटेड पे लगा सकते हो। इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत ही अच्छी टीम है, बट पाकिस्तान थोड़ा लीग थोड़ा अजीब सा लगता है मुझे, कभी भी कुछ भी हो सकता है। And here comes the six we were waiting for. It was lower one pulled away. It's six. So Ishan Kishan 79 of 51 balls. Laharu Kumara, no, you don't do that. He is just bowling the slower one now. Slower one, slower one, slower one, slower one. Why the hell you are ball every ball a slower one? Give him. Oh, that's a very good shot. So 11 from this over so far. Oh my god. 11 runs so far in this over. Full toss, pulled away. It's 4. So 15 from this over so far. So 15 from this so far. India was slowed down, but now they have got the over. 15 from this over so far, and last 2 balls to go. Doesn't look like. Single. Sixteen from this over so far. That's a very good over. Last ball to go.
16 from this over. Last ball to go. Slower one into the pitch and it will just be a single. 17 from this over so far. 147 is the score now. In 16 overs, they are going at 9.19 per over. जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लो, जिसने लाइक नहीं करा वीडियो को लाइक कर लो, अच्छा लगता है। खिलाड़ी कुमार ने सिर्फ एक विकेट लिया है और 47 रन दे दिए। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, लाइक नहीं की वीडियो को तो लाइक कर सकते हो। Shanaka will bowl the next over. That's a slower one. Good slower one. "88 for 54 for Ishan Kishan." He's the one of those players who can bat at anywhere. He's actually the top order batter for India in T20s so far in this inning series. It's a wide ball. India 150 for 116.2 overs, 3 runs so far. Oh, that's a short ball pulled away. "30-50 comes at 36 ball. That is the slowest by the merit of all the 550s they gave. Bowlers are now realizing it's a slower onto the pitch and batsman has been having a trouble now. So far just 3 runs in 3 balls, including a wide ball. That's a extra freebie. Oh, giving himself. That was a smart batting by Shreyas Iyer. He just thrown the line of the bowler by making him ball at the legs. So it's a very good welcome boundary for India. 155. Oh, going for a big one. Could not connect it. So 8 runs from this over so far. Line and rhythm will be the key here. Slower one and it's a wicket.
89 or 56, and Ishan Kishan has to go, and Dashin Shanaka will be the man to take his first wicket in this match. Ishan Kishan is tired. Of course, he is tired. That's a very good innings by Ishan Kishan. 89 of 56 balls, strike rate of 158, and it is a very good innings. You can't deny this man that he is the one for the bright future of India. Ravindra Jadeja, my goodness. Ravindra Jadeja has been out of Indian team for a couple of months so far. Let's see what he can do now. He will be on strike for the first ball. Last 3 overs to go. And let's see who is going to ball. 18th over. 18 बॉल बची हैं बस इस मैच में. Here comes Shamira. He is a man who is going to ball a very good bowling. Ravindra Jadeja will be the one who is going to bat one down. That's a straight to the fielder as an overthrow. Looks like an overthrow. You can't afford these runs, Sri Lanka. Come on. You can't give them overthrow runs, can you? Dasmunta Chamera. And Shreyas Iyer will be on strike now. Slower one. Bouncer, and it's a 4. Very good shot by Shreyas Iyer. 23 of 16 balls. So 7 runs from 3 balls. That's a very good starting of the over.